बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। पीटीआई वाले पार्लियामेंट से तनख्वाही भी ले रहे हैं और असम्बली में नहीं जाते। जुबानी बातें ना करें, असम्बली नहीं पसंद तो सीटें भी छोड़ें। अगर स्पीकर को 4 दिन में इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म दे तो क्या पीटीआई तैयार है? जस्टिस मंसूर अली शाह का यह सवाल था। पीटीआई तो इंतखाबात कराने का ही मुतालबा कर रही है। वकील इमरान खान का जवाब था, पीटीआई का पार्लियामेंट में होना या ना होना एक सियासी सवाल है। इसी समाअत का अहवाल जान लेते अपने नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। आपको एक बार फिर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर यह समाअत है। पीटीआई वाले पार्लियामेंट से तनख्वाह भी ले रहे हैं और असम्बली में भी नहीं जाते। जुबानी बातें ना करें, असम्बली नहीं पसंद तो सीटें भी छोड़ दें। अगर स्पीकर को 4 दिन में इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म दे तो क्या पीटीआई तैयार है? जस्टिस मंसूर अली शाह का यह सवाल है। वकील इमरान खान की जानिब से कहना है कि पीटीआई तो इंतखाबात कराने का ही मुतालबा कर रही है। समाअत का अहवाल जान लेते हैं आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज समाअत की इमरान खान की उस दरख्वास्त पर जिसमें उनका मौक़िफ़ है कि जो नैब तरमीम की गई हैं पार्लियामेंट की तरफ से वो खिलाफ कानून है और उसमें पार्लियामेंट की जो असल हालत है उसमें बहाल के बगैर और मुकम्मल नुमाइंदगी के बगैर एक नामुकम्मल पार्लियामेंट के जरिए ये कानून साजी की गई है। लिहाजा इस कानून साजी को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया जाए और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया जाए। इस पर आज समाअत के दौरान दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ। इस मौके के ऊपर जो इमरान खान के वकील थे ख्वाजा हारिस, उन्होंने कहा कि जो अदालत की तरफ से 2 सवालात किए गए थे। पहला ये था कि क्या जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनको भी एहतसाब के अंडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है। और दूसरा सवाल ये था कि तहरीक इंसाफ खुद पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन रही तो वो कैसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, शौकत तरीन, बाबर अवान समेत दीगर ज़मान पार्क पहुँच गए। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, आज अहम मुलाकात होने जा रही है, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, असेंबलियों की तहलील के हवाले से हतमी तारीख के तयन का बड़ा फैसला लेने के लिए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने बड़ा इजलास तलब कर लिया है और चारों सूबों और वफाक से जो पीटीआई की लीडरशिप है उसका ये इजलास तलब किया गया है, जो थोड़ी देर बाद ज़मान पार्क में इमरान खान की ज़ेर सदारत जो है वो शुरू होगा। इस इजलास में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर, पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, पार्टी के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी, इसी तरह शिबली फराज, उमर अयूब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद अहमद खान, इसी तरह सिंध से इमरान इस्माइल, अली हैदर जैदी, बलोचिस्तान से कासिम सूरी, बाबर अवान, अली जफर एडवोकेट, शौकत तरीन, हमाद अजहर, यास्मी राशिद, मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद। तो चारों सूबों की क़यादत और 5 जो वफाक की जो मरकज़ी जो लीडरशिप है, मरकज़ी अहदेदार हैं, इन तमाम को बुलाया गया है क्योंकि पीटीआई 17 तारीख को एक तो पावर शो करने जा रही है तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर पर पंजाब में, और साथ ही साथ इमरान खान ने जो कि इस बात का भी ऐलान करने का इरादा रखते हैं कि किस दिन जो है हतमी तारीख होगी असम्बलियों को तहलील करने की, तो उसके हवाले से एक बड़ी मशावरत को आज बुलाया गया है कि ये इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा और उसके बाद जो है वो इत्तेहादी जमात मुस्लिम काफ की क़यादत को जो है वो मदऊ किया गया है। साबिक वफाकी वज़ीर मोनस लाई जो है वो अपने वफ्द के बाद आज शाम को वो भी इमरान खान से मुलाकात करेंगे। तो यूँ लगता है कि आज पीटीआई की लीडरशिप जो है वो असम्बलियों की तहलील के हवाले से और अपने आइंदा सियासी लाया अमल के हवाले से जिस रोड मैप को मुरतब करना चाहती है आज उसको हतमी शक्ल देकर मुस्लिम काफ की क़यादत को पंजाब के हवाले से आगाह कर देगी, जबकि केपीके के हवाले से महमूद अहमद खान को आगाह कर दिया जाएगा जो आज के इजलास में शिरकत भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। हमाद हसन ने कहा है कि आप इतने ही सादी कमीन हैं तो इलेक्शन करवाएं, आम इंतखाबात के नाम पर इनकी कांपें टांग जाती हैं। शफकत महमूद का कहना था कि भगोड़ों को वापस लाया जा रहा है। सुलेमान शहबाज के अकाउंट से 16 अरब रुपए निकले, ये सारा मुल्क लूट कर खा गए, इनका हिसाब होगा, माफ़ी नहीं मिलेगी। अगर ये इतने ही सादिक और अमीन हो गए हैं तो कराए ना ज़रा इलेक्शन, देखते हैं लोग इन्हें सादिक और अमीन मानते हैं कि नहीं। इलेक्शन का नाम लो तो इनकी कांपें टांग जाती हैं। और ये शख्स जो इमरान खान साहब को आज जिस तरह के जुमले कस रहा है, तुम तो किक बैक स्पेशलिस्ट मशहूर हो हुकूमत के कॉरिडोर्स के अंदर। ये जो भगौड़े थे उनको भी वापस ला रहे हैं। एक भगौड़ा पहले वापस आया था जो कि आजकल फाइनेंस मिनिस्टर है,
और एक और भगोड़ा जो था वो कल आया है वापस, सलमान शहबाज। और ये जो सलमान शहबाज है, 16 अरब रुपया इनके अकाउंट्स में से निकला, लूट के खा गए सारे मुल्क को, और बातें करते हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये हिसाब होगा और आपको कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। आपको बराह रास्त से चलेंगे। वज़ीर मुमलिकत खारजा अमूर हिना रबानी घर की दफ्तर खारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। We had strong, hard evidence to be making the case that we're making today. Now, let me say that we all claim that terrorism in all its forms and manifestations is condemnable. We also know that it poses a serious threat to peace and security. And I think if there's one thing that has bogged this region down, it is the scourge of terrorism. And there's one country which has been on the receiving end of the scourge of terrorism, it is Pakistan. Yet the other country, which is the source of terrorism in Pakistan, continues to play the drum of being the victim of terrorism. I mean, it's a remarkable world, right? It's a very interesting proposition that we find ourselves in. Now, coming back to the Lahore incident, it is a clear evidence of a terrorist attack which was planned, which was supported by India, which was to target innocent civilians in Pakistan, Lahore, Johor town. It reflects India's persistent hostility towards my country and the use of terrorist proxies to achieve nefarious objectives. And we believe objectives which are actually going to harm them also. Because when you try and burn a neighbor's house, the fire will come and burn you too. Our professional law enforcement agencies and judicial authorities have brought the perpetrators of this attack to justice, who have received punishment, but these are only the frontmen, as we all know. The masterminds and the facilitators remain at large and under Indian state patronage and protection. I can assure you that the government of Pakistan will pursue this relentlessly at every level. Now, India has already earned the infamy for its terrorist designs and actions. Its actions in the IIOJK, the infamous massacre in Indian Gujarat, which made some countries close its door on many well-known Indian leaders, and which still ensures that many other Indian leaders still continue to glorify this incident. They want to identify with that incident rather than away from the incident. This shows the psyche which is currently going on, and I tell you, it's a dangerous one. The Samjhota train incident that we all know about, its terrorist proxies continue to use neighbors' territories and blatant support to Baloch militant organizations. All of these point to one objective and one method. The objective is to undermine Pakistan's peace and security, and the method is simple: terrorism. Now, we can call what India is doing to be many things, okay? One I think, fragment of a sentence which describes it well is chronic terrorism syndrome, okay? And how do you define it? You perpetrate terrorism, you fully supported and abetted by the state. The Lahore incident, the Samjhota train incident, the Yadev evidence all point out to that. You play as a victim of terrorism to gain international sympathy and create subterfuge. No country has used terrorism better than India. To play on the back of the attention of the world on terrorism and to play the victim, no country has benefited from it better than India. Portray yourself or itself as the champion of counter-terrorism. And it's interesting because this continues to be a country which has made no contribution whatsoever to, has always played lip service, but had made no contribution to international counter-terrorism in any way. If you compare Pakistan and India, you will find Pakistan always be in the forefront of counter-terrorism, of ensuring that we are a player in the world to try and make sure that terrorism does not continue to haunt us. It also continues to divert international attention from its state-sponsored terrorism and human rights violations in the IIOJK. It blatantly violates international laws and regulations to continue terrorist activities and their support, facilitation, and financing. Maybe it may not be very wise to bring it in this context, but allow me to remind all of you that India is a country which continues to be what I call a rogue state. Because the country that tries to deny the existence of Security Council resolutions and insists on other countries
imagining a certain part of disputed territory as its own shows what type of a mindset this country has. And I can say, of course, it's a very, very dangerous mindset. Create hurdles in judicial proceedings when terrorism cases are sub judice. Paralyze United Nations Security Council. And this is also very rich because, you know, do what you blame others for. Okay? So India has been consistently paralyzing United Nations Security Council's sanctions regime by blocking listing of Indian terrorists actively aided and financed by the state of India. And in this, I have 4 names that I can share with you, I think at the end of this, which are recent Indian nationals whose listing has been blocked by India. In fact, I do have those names with me. This is Gobinda Patnaik, Parthasarthi, Rajesh Kumar, and Mr. Dungara. All 4 names blocked by India in UNSC listing. And obviously, I think I don't need to remind anyone that India has had a constant role in destabilizing its neighboring countries and weaken their economies to try and pursue its hegemonic designs in the region. CPEC, Balochistan are very good examples. I also question, I can just try and remind India that you cannot have islands of excellence in a sea of depravity. So when you try and harm your region, you actually end up harming yourself. Now, we can understand that India is currently very frustrated because Pakistan has been, because of the delisting of Pakistan from FATF's grey list, right? They have completely mastered the art of using international organizations for their political gains. I think they should give lessons on that type of diplomacy to the world. Now, this cannot change the fact that India remains the recruiter, the financier, the facilitator of various terrorist outfits and foreign terrorist fighters within the region. The world may be ignoring this, what I would consider to be a festering pool of terrorism, but at its own peril. Now, what is ironic, as I've already said, is that India has been beating the terrorism drum, chairing UNSC meetings on terrorism. Now, it has been caught red-handed in this particular incident, orchestrating terrorist attacks in its neighboring country, Pakistan. Let me be clear to you, and as I've already said, when you burn your own neighbor's house, the fire will reach you too. I think India should desist from this policy and start looking at this region as a neighborhood that it is. India's unabated slip into the abyss of extremism is being clouded by this growing India, emerging India narrative. And let me conclude by saying, because you might be asking, what is yes, this is all the evidence, the dossier is there, but what is the purpose? We believe truly that the international community, in particular the UN and FATF, have the responsibility now to hold India accountable for its terrorist actions. So we are looking for accountability. The Lahore incident for us is a test case for the credibility and integrity of international counter-terrorism and counter-financing of terrorism regimes. The world must show that efforts to counter terrorism are non-discriminatory. The international conscience cannot be held hostage to what are clearly political and economic exigencies of the time. I also want to draw the world's attention to the victims who lost lives or were injured in the Lahore terrorist incident, as well as their families and loved ones. They look towards all of us for justice. We have shared this dossier with the members of the United Nations Security Council. We are also sharing it with the UN Secretary General. We hope that they would look into this evidence and fulfill their responsibility. Pakistan, for its part, will remain fully committed to eradicate terrorism in all its form and manifestations. As far as this specific issue is concerned, I know you already know from the Interior Minister's briefing, but I will just repeat. Red warrants through Interpol have already been issued. Mutual legal assistance requests to countries whose territory has been used for this incident have been sought, and we are, as we already said, will be formally taking it up at the UN. We have shared the copies, are in the process of sharing the copies of the dossier with the Security Council members and the United Nations Security Secretary General. And our expectations of the world is that if this is allowed, because of India's growing, because of what we call the exigencies of political and economic interest, we will all have to pay the price for it.
we will all have to pay the price for it. So with that. Yes, please. मैम अलानुर वज़ीर मशरिक टीवी चैनल से गुलभूषण यादव और फिर अभिनंदन और अभी ये जो मौजूदा हुआ है, तो क्या आप पर उम्मीद है कि भारत को इन सब कुछ का सज़ा मिलेगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है, सॉरी। सो देखें, जो फैक्ट है वो ये है कि अगर कोई मुल्क एक दूसरे के ऊपर हम वो तो कह सकते हैं, एलिगेशंस लगाना आसान है, ये मुल्क ये करता है ये, अगर एक मुल्क का एक एजेंट पकड़ा जाए फिर वो पूरे तरह कह भी दे कि वो किसके एजेंडे पे आया था, किसका एजेंट था, और वो हाजिर सर्विस हो और वो निकल जाए और फिर भी दुनिया उसको तस्लीम ना करे या उसको क्वेश्चन, सो दैट वुड बी आयरॉनिक। सो हाँ, हमें इस पे उम्मीद है कि ये जो इनका ट्रेल ऑफ एविडेंस आता जा रहा है, मैंने बल्कि आपसे नाम नहीं लिया ना, आपने अब ये मौका दिया तो मैं इसका बताना चाहूँगी कि पिछले 3 सालों में 211 individuals of law enforcement agencies have been attacked through Raat-sponsored attacks. There have been 1,213 attacks in Pakistan in the last 3 years where we have evidence that they were Raat-sponsored. Now, if I take you through the list of the last, आप कह रहे हैं ना कि उम्मीद है, उम्मीद इसी चीज़ पे हो सकती है ना कि दुनिया को नज़र आ जाए, सामने आ जाए कि कितना ज़्यादा उनकी तरफ से ये होता जा रहा है। Now, attack on PC Hotel Gwadar, 11th May 2019. Attack on Chinese consulate Karachi, November 2018. Attack on oil exploration company at Gwadar, October 15th, 2020. Suicidal attack at Gwadar, 20th August 2021. Suicidal attack on FC camp at Panjgor Noshki, February 2022. Indian disinformation campaign we all know about. So really, my question is, how much is too much? And is this not too much? And how would we allow a country to drum the terror, to use the terrorism drum on a platform like the Security Council? And how do we deny, then questions are asked about the credibility of these institutions, of course. So I think this is clearly a very serious matter, and real questions need to be asked. Yes, ma'am. थैंक यू मैम। मिनिस्टर साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, राशिदा सियाल अब तक से पुलवामा अटैक हो जाए, पठानकोट हो जाए या मुंबई अटैक्स हो जाते हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से इंडिया की जानिब से जो एक केस, स्ट्रॉन्ग केस बनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, फिर फैटफ में भी पाकिस्तान को पॉलिटिसाइज करके जिस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है या प्रेशराइज किया जाता है, जो आपने एक पूरी सिलसिले बताए जो अटैक्स इंडिया ने किए पाकिस्तान में, क्या वजह है कि हम उस तरीके से अपना केस नहीं लड़ सकते? हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर है या क्या वजह है कि फैटफ के अंदर हम इंडिया को लिस्टिंग क्यों नहीं करवा सकते हैं? एक तो ये जानना चाहूँगी। सेकेंडली, इससे हट के आपका रिसेंटली अफ़गानिस्तान का विज़िट हुआ और उस विज़िट के हवाले से भी कुछ बात हुई कि वहाँ पर आपकी जो मीटिंग्स थी हाई ऑफिशियल्स के साथ वो नहीं हो सकी हैं। इसमें किस हद तक सदाकत है कि एक खातून वज़ीर ख़ारजा के जाने से शायद वहाँ कोई मसाइल हुए? ये एक इम्प्रेशन है और नेशनल असम्बली में भी इस पर बात हुई है, तो इस पर आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगी। शुक्रिया। Okay. I will not entirely agree with, I will speak in English because, I will not entirely agree with the fact that we have not been able to make a case. Okay. As I said, and I repeat, and I say this because as someone who's been associated with foreign policy management for many years now, I would have hoped 10 years back that 10 years from then, we'd be looking at a different region. That we'd be looking at a region which was at least moving towards opening doors towards each other, for its people, towards prosperity. But we see this continuation of trying to, bog the region down with the scourge of terrorism, right? Now, these incidents, the fact that you have Yadav here, all these are clear signs of a very large country trying to dampen the entire region through its, what I would consider nefarious designs, right? I don't think these designs are good for India also, because India is also part of the neighborhood. It should want the prosperity of the neighborhood. Now that thought process is something that you can't change, that we would like to be able to change.
So if you see in the last 5 to 10 years, India has changed tactics and become much worse than it used to be, where it is now propagating, extremism in some ways and propagating against certain minorities. What it did in IIOJK, what it did for its own elections, sent jets into one nuclear power, sending jets into another nuclear power. Do we need evidence of more irresponsible behavior for the world? That's evidence enough. And then we all found out what was in there, in Balakot, which was told, the world was told that there were certain camps, etc., and we found there were some trees. That's it. Do we need more evidence as to what country is doing what? So I think that case is well made. I don't think it is. But as I said, there is the reality, and I'm not, I'm clearly saying this. There are political and economic exigencies which are making some entities look away from obvious things. We decided that we are not going to take any other questions, but that नहीं एक मिनट अफगानिस्तान के ऊपर नहीं लेना था, लेकिन क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन देने का मौका मिल रहा है इसलिए मैं ये क्वेश्चन बिल्कुल लूँगी. देखें, पहले तो हमारा एक असूल है, मैं ये and I'm using this opportunity, thank you for giving me this. हम दफ्तर खारजा हैं, ठीक है, स्पोक्स पर्सन दफ्तर खारजा को रिप्रेजेंट करती हैं. हम सारे यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो आला अफसरान दफ्तर खारजा के हैं. उनका मैंडेट सोशल मीडिया मैनेजमेंट नहीं है, उनका मैंडेट हुकूमत पाकिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना और अपनी जॉब करना है. So please forgive us if we consider that to be a secondary job, not the. So we are less careful about the, कहते हैं ना तमाशा that is going on in social media, and more careful about the messaging that we're doing to the people that we want, that is our job to interact with. So बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जो एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रही होती है. लेट मी कैटेगोरिकली से कोई ऐसी मीटिंग नहीं थी जो हमने मांगी हो जो हमें डिनाई की गई. तो वो एक आ रहा था कि जी a certain minister refused to meet. We were there for a certain number of hours. We could only fit in a certain number of meetings, and that there's absolutely no truth in that whatsoever. In fact, if you were to ask me what is my assessment, I was very well received, as I expected to be. There was no reason why I should not have been well received. The other thing is that as far as the meetings are concerned, or the purpose of the trip is concerned, I feel we were able to achieve exactly what we wanted to achieve, and I don't want to delve greater into details. मैंने पहले भी कहा है, please respect the fact that our job is to do, or at least the way Pakistan looks at diplomacy is that our job is to do deep, useful diplomacy away from theatrics. So हम नहीं visits पे जाके या meetings करके बाहर आके कहते हैं हमने उसको ये कह दिया, हमने उनसे ये करवा लिया, हमने ये कर दिया. ये हमारा तरीका नहीं है, और ना ही हम इस तरीक़े को अपनाना चाहेंगे. हमारा तरीका ये है पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करके, पाकिस्तान के जो भी इंटरेस्ट हैं उनको प्रोजेक्ट करने के लिए हमें जो करना पड़े वो हम करते हैं. कभी हम उसको सामने लेके आते हैं और कभी हम उसको बिल्कुल सामने नहीं लाते, क्योंकि सामने लाने से शायद उसका फ़ायदा नहीं नुकसान होगा. ठीक है. Thank you, ma'am. Thank you for the clarification. My question is, when on one side of our borders, India is sponsoring terrorism, the other side of the border, we are under perpetual state of firing, and many innocent Pakistanis, they are being killed. But why still the world is silent? Why still the world is not standing with us? This dossier, as you're speaking today, I heard 3-4 dossiers of the same kind in the past. What happened with the dossiers? What would be a different happening with this dossier? Thank you. देखिए, पहले तो मैंने आपको पूरा एक्शंस का बता दिया कि हम इसमें क्या क्या करने जा रहे हैं. रेड वारंट्स इशू हो गए हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की हमने रिक्वेस्ट दे दी हैं. ये एक ऐसा केस है जो कि पहले भी डॉसियर्स वर ऑब्वियसली बेस्ड ऑन एविडेंस. ये एक ऐसा केस है जिसमें अनडिनाइबल एविडेंस है ऑफ नॉट ओनली स्टेट स्पॉन्सरशिप but propelling, जिसको कहते हैं mastermind sitting under state patronage, continuing to enjoy state patronage. All cases are very good cases. This is a particularly unique case where nobody, it seemed, tried to even hide what they were trying to do, right? So this is the strongest evidence that there could be. I think we look towards the region, we took towards the world.
to see reality for what it is and to try and discourage a very large country, which could, frankly speaking, play a role of bringing peace and prosperity to the entire region, to not to be a harbinger of that and not to become a perpetrator of terrorism and the face of terrorism in the region. Right? This is all we can seek. However, let me also say that when it comes to managing your border areas and when it comes to making sure that they're peaceful, we will also do whatever we need to make sure that Pakistan's security is always seen to be before anyone else's. Pakistan will never compromise on what are its own red lines. Pakistan is also very cognizant of the fact that we want to engage with everyone in a way that we'd rather find mutual solutions. Right? I think we're in the process of engaging very deeply with all entities to be able to do that. So it's, I can tell you that security of whether it's our diplomats, or other personnel in foreign missions here, or people, civilians also, because I think मैं इस पर ये बिल्कुल कहना चाहूँगी, बहुत एक आम तासुर है कि जी civilians हो गए शहीद तो it's okay. Of course it's not okay. एक पाकिस्तानी शहीद होना कहीं पे हमने उसको end तक, we have to make sure that an incident like that never happens again. जो नुकसान हो गया उसको तो वापस नहीं ला सकते. But we take this very, 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 strongly, strictly, and take it very seriously.